Morning, ma'am. Good morning. Good Hi, good morning. morning. Morning, Good ma'am. morning. Good morning, Dee. I'm so glad everybody so up in charge post Diwali. नहीं तो पहले कैसे होता था दिवाली के अगले दिन सुबह आंखें नहीं खुलती थी and it was like it used to be a very dull day. So this time it is happening, and especially with today's day. Today the day is 13. Well, the date and the chapter that we are reading, both of them. And I hope everyone had a great Diwali. So वो पता तो लगी गया था हमें ग्रुप पे थे Fantastic. हाँ Fantastic. Very, very beautiful. yeah, it was beautiful. It was actually really amazing. I was so happy to see that so much of love and momentum happening in the group also. सब इतने अच्छे से तैयार हुए थे, like really mind blowing. It's fun. And the day after Diwali is even better. We go for Nirvana laddu. What is हम लोग that? के मंदिर में लड्डू चढ़ाते हैं. आज महावीर भगवान went for मतलब उनका मोक्ष हुआ था, निर्वाण हुआ था. अच्छा So we have to go to the temple at 9. अच्छा, अरे वाह, very Yes. good. मतलब बहुत ही auspicious day है ना, निर्वाण हुआ था Very तो auspicious day. Yes. Every attain day. enlightenment, that is. Yes. और दिवाली के नेक्स्ट Actually, डे आज otherwise अन्नकूट है. आज Yeah. अन्नकूट होता है ना, आज Yes. अन्नकूट होता है, फिर एक दिन का गैप है, then there is भाई दूज, like that. And छठ also for बिहार के लोग छठ छठ तो बनाते हैं. छठे दिन शुरू होती है ना, अमावस्या के 6th डे से होती है, Okay. इसीलिए उसको छठ बोलते हैं. तो 6 डे से होती है, 3 दिन की होती है. So I think this time it is 17, 18 and 19. और date here and there. इस साल सब कुछ एक one date here and there हो रहा है. वैसे otherwise according to the calendar dates it's 18, 19 and 20. Yeah. And then even in I think Gujarat there is a festival that starts from Diwali for the next 1 week. तो उनका भी 19 तक कुछ है, कुछ चल रहा है. I don't know what it is called. Maybe someone from Gujarat should be able to share with us. Yes, ma'am. है ना, 1 week का दिवाली के बाद फेस्टिवल होता है कुछ, where the Yes, whole ma'am. of वो Gujarat is लोग shut बोलते हैं down. कि वो देव दिवाली जो है, हाँ तो देव दिवाली तक वो चलता रहता है, मतलब वो भाई दूज एंड एवरीथिंग लाइक कंटिन्यूएशन ही होता है लाभ पाचम तक. हाँ, लापाचम, I don't know what it means, but इसलिए मुझे पता था क्योंकि मुझे 19-20 को पुणे जाना था. तो जब मुझे पुणे जाना था तो मेरी अहमदाबाद टीम मुझे बोल रही थी कि मैम थोड़ी देर के लिए आप यहाँ आ जाओ. तो मैंने सोचा था मैं सुबह की फ्लाइट लेके अहमदाबाद चली जाऊंगी और अहमदाबाद में दोपहर तक टिल अबाउट लंच, पोस्ट लंच, देन आई टेक अ फ्लाइट एंड गो टू पुणे. सो देन उन्होंने बताया कि मैम 20 तक तो पूरा गुजरात बिल्कुल शट डाउन मोड पे है, कोई भी नहीं है. So that's how I came to know that there's a festival for 1 week after Diwali. So good, there's so much of festivities in the air. अच्छा लगता है. Life is a celebration in any case. So yes, good morning to everyone listening on the YouTube. We all love you and thank you for being consistent. And with so many views happening and increasing, we know that आप सब भी अपनी जिंदगी बदल रहे होगे. But then kabhi bhi mauka mile to people on the YouTube, please join at 6 a.m. classes. The energy at 6 a.m., 6 to 7 a.m. will start transforming your life also. That's an added bonus, like icing on the Black Forest. So it'll work like that. So today's day is so auspicious, so good, 13th of November and day 13. Make all your wishes come true. So आज से अभी तक हम कल तक अपनी past life पे work कर रहे थे, जो भी हमने बचपन से अभी तक किया था, whether it was to do with health, whether it was to do with money or the career, people who made a difference to us, magic dust, जिनकी वजह से हम जो हैं वो हैं, जो लोग हमारी लाइफ को इतना इजी करते हैं. करियर के लिए हमने थैंक यू बोला. तो बचपन से लेके अभी तक whatever like we have been living, whatever kind of life we've been living, हमने उसके लिए बहुत सारा थैंक यू बोला था, because वो obviously किसी और की वजह से थी. Others make our life easier. So from today we are going to work on ourselves, for the next 10 days. That is from day 13 to day 22. हम सिर्फ अपनी ड्रीम लिस्ट पे काम करेंगे. जो भी हमारा सपना है, जो हमारा पर्पस है, अगर आपको पता लग गया है या कोई बात नहीं, इवन इफ इट इज पर्पस नहीं पता लगा है, लेकिन आपको ये है कि मुझे अपना खुद का घर खरीदना है, I want to buy a car, I want to sell off this property, some piece of land, it could be to get married to a beautiful partner,
well, it could be to buy some specific kind of shoes or a piece of clothing or whatever it is, you know, जो आपको था कि I always wanted to buy Jimmy Choo shoes or an MK bag or a Gucci bag. Go ahead and write it. इसमें कोई वो नहीं है. Materialism के रास्ते से ही निर्वाणा आता है वैसे भी, है ना. जैसे चक्रास भी नीचे से ऊपर तक होते हैं, तो पहले के नीचे के जो 3 चक्रास होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर चक्रा, वो तीनों मटीरियलिज्म, वर्ल्डली फेम, यू नो, अपने लिए वो करके, सो तरीका ही वो है निर्वाणा का कि आप अच्छे से सारे तरह के सुख को एंजॉय करो, लग्जरीज एंजॉय करो, अपने आप लाइफ का पर्पस और वो लेवल एक बार ऐसे आ जाता है वेयर यू वांट टू स्टार्ट गिविंग इट टू द वर्ल्ड थ्रू डिफरेंट मीन्स, किसी भी तरीके से. So which is just perfect. So जो भी करना है, जो हमारे dreams and desires है, अगर आपको अपने business को किसी specific you know like platform तक ले जाना है, that you know the turnover to be say 2 crores or whatever, या आपको अपनी monthly income को एक specific number तक ले जाना है, that you want to start receiving say 5 lakhs or 10 lakhs or 15 lakhs or 2 lakhs or whatever it is, उसको ऐसी चीजें dream list में हम लिखेंगे और उनको अचीव करने के लिए वी विल have a beautiful journey from day number 13, that is today, till day number 22. It is जो भी हम जो कुछ भी हम करेंगे आज से लेके 22 डे तक, वो सब कुछ हमारा ड्रीम अचीव करने के लिए होगा. And this is a very beautiful chapter indeed. Make all your wishes come true. इसमें हम image देख लेते हैं. So the image that is made here is कि एक कोट रखा हुआ है, उसकी पॉकेट में एक लिस्ट है और उस लिस्ट में बहुत सारा ग्रैटिट्यूड दिख रहा है हमें उस तरह उसके आसपास. दैट मीन्स ये लिस्ट हमको आज बनानी है. ठीक है, एडिट कर लेना अगर आपने पहले किया है. मेरे तो बहुत सारे ड्रीम्स नए इवॉल्व हुए हैं, पता नहीं कहाँ से, यू नो, नए इवॉल्व हुए हैं. पहले नहीं थे ऐसे दिमाग में कि मुझे ये चाहिए या ये करना है, बट अब है ऐसा. So of course हम सबको editing और updating करनी पड़ेगी because human being constantly progress, evolve and expand हो रहे हैं. हमारी सोच, हमारी मतलब हमारे जीने का तरीका भी चेंज हो रहा है. लास्ट ईयर में भी चाहे हम इन सेशंस में थे, बट लास्ट ईयर दिवाली वाज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन. यू नो, थॉट प्रोसेस अलग था, ग्रैटिट्यूड का लेवल अलग था, अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग था, सो पर्सपेक्टिव का लेवल अलग था. नाउ इट इज डिफरेंट, है ना, because every day we are growing so much and we are growing in leaps and bounds, you know, in terms of our mindset, in terms of the quality of the practices also that everyone is doing. I mean, it is so mesmerizing. So that is what we are here. So today also अगर आपको लगता है कि कोई एक नया ड्रीम है और नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, I would really want to do this in my life or whatever, add that to your list. edit करना है, क्योंकि आज हम अपनी जो अनलिमिटेड चीजों की लिस्ट थी जो हमने डे 0 पे लिखा था, I want this, I want this, I want this, उसको एडिट करके हम उसमें से टॉप 10 चूज करेंगे and we are going to put that in the sequence here. Okay, not in order of importance. 10 को कैसे भी आप लिख सकते हो, लिखने का फॉर्मेट ऑफ कोर्स हमको इसमें सिखाया जाएगा. And then बहुत शिद्दत के साथ, with a lot of sincerity and commitment, we are going to work on that list for the next 10 days and do the practices really sincerely. Because I think past का gratitude कर करके we have already laid the foundation on which we can start building, you know, like we can start making a building on that foundation. Or we have made the land very fertile from day 1 to day number 12. So we have made the land very, very fertile. Now is the time to sow the seeds so that they can start reaping and we can harvest them. Okay, that we have done. So yeah, today is the day when we started work. We'll be working on our dreams. And आप देखना इतनी फटाफट वो dreams, मतलब dream list में से इतने बड़े बड़े मेरे dreams थे जो उस वक्त जब मैंने लिखे थे तो they looked very impossible. In terms of the amount of money I'm receiving, in terms of, you know, the kind of travels I wanted to make, in terms of how I wanted my life to look like. So वो जितने भी किए थे वो सब मतलब पूरी turn around story हो गई है मेरी life की. और कितनी बार I think almost 5 dream lists just in 3 years of time मेरी fulfill हुई हैं. बहुत beautiful तरीके से, in the least expected manners. So उससे विश्वास, that, you know, like that faith that we have towards the universe, that is only strengthened.
एक विश्वास बहुत स्ट्रांग हो गया है कि मतलब माय गॉड, ये मतलब यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग टू अस and showing the way and bringing the dreams in the most unexpected manner, and that is so beautiful. तभी तो मैं आपसे इतने conviction के साथ बात कर पाती हूँ that just do this and this will happen because I have already done what I tell you. So if I tell you that 300 लिख लो, इसको 100 बार लिखो, gratitude में रहो, जैसे लो हो रहे हो थैंक यू बोलना शुरू करो, ये सब मैं कर चुकी हूँ और इसका मैंने रिजल्ट भी देख लिया है. इसीलिए मैं इतने कन्विक्शन के साथ आपको बोलती हूँ कि अच्छा ये हो रहा है, ऐसे मत करो, उस रास्ते पे मत जाओ, जस्ट थिंक डिफरेंटली एंड डू थिंग्स डिफरेंटली और डू थिंग्स इन अ न्यू वे. लाइक दैट इज हाउ लाइफ टर्न्स अराउंड and we will start yielding the harvest of it, है ना. सो आज पूनम पढ़ रही हैं बिकॉज एक्चुअली कल्पना जी पढ़ रही थी बट उनका कुछ वो हो गया, मतलब लास्ट मोमेंट चेंज बिकॉज ऑफ सम इशू. So, yes, Poonam, you can start reading, please. Good morning, everyone. Day 13, make all your wishes come true. Imagination is a true magic carpet by Norman Vincent Peale, 1898 to 1993 writer. If you have been following the magical practices day by day, you have now built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. But today is an exciting day because you are going to use gratitude's magical power for your dreams and desires. Hundreds of native cultures through the centuries have traditionally given thanks for what they want before they receive it, creating elaborate ceremonies to put as much energy as they could into giving thanks. The Egyptians have celebrated the flooding of Nile River since ancient times to ensure the continual flow of water in the river. American Indians and Australian Aborigines perform rain dances. Various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it. And the very nature of prayer in every culture and religion is giving thanks before having received what is desired. The law of attraction says that like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an image of what you want. Then, to attract your desire to you, you have to feel as though it's yours, so that how you feel is also like how you would feel when you had what you wanted. The easiest way to do that is to be grateful for what you want before you have received it. If it never occurred to you before to use gratitude to receive what you want, you have now discovered another of its magical powers. The very word in the Holy Scriptures promise exactly that. I quote, "Whoever has gratitude now will be given more in the future, and he or she will have an abundance," unquote. Gratitude is something you must have before you can receive it, not something that you simply do after something good has happened. Most people are grateful after they receive something good, but to make all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after. Through the act of being sincerely grateful for receiving your desires beforehand, you immediately form an image in your mind that you have it. You feel as though you have it, and you are fulfilling your part. If you continue to hold to that image and feeling, you will magically receive your desire.
You won't know how you'll receive it, and it is not your job to figure it out. You don't try to figure out how gravity is going to keep you on the ground when you go for a walk, do you? You trust and know that when you go for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. Likewise, you must trust and know that when you are grateful for what you want will be magically moved to you because it is the law of the universe. What do you most want right now? At the beginning of this book, I asked you to get really clear about what you want in every area of your life. If you didn't do that earlier, now is the time to do it. Go to the list you created now and choose your top 10 desires for this magical practice. You can select 10 desires from different areas of your life, such as money, health, home, and relationships. Or you might want to choose 10 desires in one area you really want to change, such as work or success. Be very clear and specific about what you want, about what you most want, so that you can see the changes magically happen from this practice. Imagine you're putting in a magic order with the universe for your top 10 desires because, in truth, by using the law of attraction, that's exactly what you're doing. Sit down at a computer or a pen and journal and create a separate list of your top 10 desires in the following way as though you have received them. Thank you, thank you, thank you for dash and fill in the blanks with your desire as though you have received it. For example, thank you for the high marks in my exam results, which got me into the exact college I wanted. Thank you for the great news that we are having a baby. Thank you for our dream home, which has everything we wanted it to have down to the last detail. Thank you for the amazing phone call with my dad that has improved our relationship. Thank you for the medical results that show I'm all clear and healthy again. Thank you for the unexpected money I received, which is the exact amount I needed for my European trip. Thank you for the doubling of a sales figure this month. Thank you for the ideas that won us our biggest client ever. Thank you for my perfect partner. Thank you for how easy and effortless our move was. Writing thank you 3 times in a row is a powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away and increases your focus of gratitude. Saying thank you 3 times is also a magic formula because it is a mathematical number of all new creation in the universe. For example, it takes 1 male and 1 female to create a baby. The male, female, and baby total 3, completing a new creation. The same rule of 3 applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your desires. And so,
When you say thank you 3 times in a row, you are using the magic number of creation and a secret magic formula. The second step of make all your wishes come true involves saturating your desires with even more gratitude. You can complete the second step at any time during the day today, either at the same time as listing your top 10 desires or intermittently throughout the day. To saturate each of your desires with gratitude's magical power, begin with the first desire on your list and using your imagination, mentally answer the following questions as though you have received your desire. First, what emotions did you feel when you received your desire? Second, who was the first person you told when you received your desire, and how did you tell them? Third, what is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Finally, reread each desire and really emphasize the magic word thank you so that you feel them as much as you can. Move on to the second desire on your list and follow the same steps with each desire until you have completed all 10 desires. Spend at least 1 minute on each desire. If you want to do something that's really powerful and a lot of fun, you can also create a magic board where you attach pictures of your desire. Cut out the pictures and attach them to a board that's in a place where you will see it often. Place the magic words thank you, thank you, thank you in big bold letters on your magic board. Or you can use your refrigerator as your magic board. If you have a family, you can create a magic board as a family project because children love it. Imagine that your magic board is truly magical and that whatever you place a picture of on your board is instantly being moved towards you. Your continued gratitude for it will magnetize it all the way into your life. Magic practice number 13, make all your wishes come true. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say, thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, sit down at a computer or with a pen and journal and list your top 10 desires. Write thank you 3 times before each one as though you've already received it. For example, thank you, thank you, thank you for dash your desire. Third, using your imagination, answer the following questions in your mind as though you have received each of your 10 desires. First, what emotions did you feel when you received your desire? Second, who was the first person you told when you received your desire? And how did you tell them? Third, what is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Fourth, finally, reread the sentence listing your desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. Fifth, if you like, create a magic board
cut out pictures and attach them to your magic board and put it in a place you see often. Title the board with "Thank you, thank you, thank you" in big bold letters across the top. 6. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words "thank you" for the best thing that happened during the day. Thank you so much. Thank you so much, Poonam, for pitching in at the last moment. Thank you. I loved it, ma'am. Thank you so much. My pleasure. And such an important chapter to read for Yes, you ma'am. also. I had to See- read this. Yeah, see, very mystical. it just so happened, huh? इसीलिए कहते हैं कुछ भी impossible नहीं होता है. Yes, ma'am. Yes, so this chapter starts with imagination is the true magic carpet, because अब हम इस book में as we go forward we will be using our imagination more. अभी तक हम लोग सब कुछ लिख के कर रहे थे, है ना? अब हमें जो लिखा है हमने उसको हमको इमेजिन भी करना है, बिकॉज इमेजरीज जो होते हैं वो बहुत जल्दी सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेटल हो जाते हैं, और जो इमेजेस होते हैं वो क्रिएशन का प्रोसेस शुरू करता है. तो अभी भी जो हमारी लाइफ में, सपोज हम ग्रैटिट्यूड की जर्नी में नहीं थे, we've just been like, हमें पता था थैंक यू कैसे बोलना है, नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, we didn't know the level of gratitude कितना डीप होना चाहिए. तो अभी भी जो हमारी लाइफ है, it is the result of the imagination, जो हम कहते हैं ना, hold it in your head, then you hold it in your hand, okay, or your thoughts become things. So this we have always known, है ना? ये तो हमको बचपन में भी पता था that जो आप सोचोगे वही होगा, जैसा सोचते हैं वैसे ही होता है, या thoughts become things. So we always knew. Now we will see the validation of this word thoughts become things, because हम deliberately अब अपने thoughts को create करेंगे और उसी alignment में feeling feel करेंगे, है ना? एंड वी विल गेट बेटर एंड बेटर एट इट. मतलब हम में से बहुत सारे लोग हैं जो काइनेस्थेटिक्स नहीं होते हैं, इमेजिनेशन विल नॉट कम वेरी इजी टू अस, है ना? कई लोग ऑडिटरी होते हैं, कई लोग विजुअल्स होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं. सो इसलिए अब हम अपना विजुअलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे थोड़ा सा, है ना? और सारे चैप्टर्स में अब एंड तक हमको मोस्टली वही करना है, बिकॉज वही हमको अपने रिजल्ट्स, अपनी डिजायर्ड लाइफ लेके आएगा, और ये डेलिबरेटली करना पड़ेगा, बिकॉज हमने कुछ लोगों के साथ कुछ उनके एक्शंस को अभी तक अटैच कर रखा है ना? जैसे हमें पता है, सपोज हमारा कोई ब्रदर इन लॉ है, तो हमने अगर उसका या तो पॉजिटिव ट्रेट्स होंगे वो हमारे दिमाग में, लेकिन अगर नेगेटिव ट्रेट्स हैं और वो हमारे दिमाग में है, तो बार बार हम जब भी अपने ब्रदर इन लॉ के बारे में सोचेंगे तो वो नेगेटिव ट्रेट्स हमारे दिमाग में इमेजरीज की तरह आएंगे. इसका मतलब है कि हम उसका बिहेवियर और स्ट्रेंथन करते जा रहे हैं अपने पर्सपेक्टिव में, तो वो हमारे साथ हमेशा वैसे ही बिहेव करेगा, इनफैक्ट इवन वर्स, है ना? क्योंकि वो नेगेटिव जो उसके साथ एक्शंस एंड बिहेवियर्स हैं वो हमने उस पर्सन के साथ अटैच किए हुए हैं, एंड दैट इज व्हाट इट इज अबाउट. सो अब हम डेलिब्रेट क्रिएटर्स बनेंगे, मतलब हम अपने टॉप 10 डिजायर लिस्ट को स्केच करेंगे, लिखेंगे. लिखने की भी प्रैक्टिस है आज, इमेजिनेशन की भी है. आज वाली प्रैक्टिस दोनों है, मतलब वी हैव टू डू बोथ, देयर इज नो ऑप्शन. ओके, सो वी हैव टू राइट ऑल्सो. राइटिंग ऑफ कोर्स आप डिजिटली भी कर सकते हो, या अपने जर्नल में कर सकते हो, एक पीस ऑफ पेपर पे कर सकते हो, अपने फोन पे कर सकते हो, टेक्स्ट में जाके, तो जैसे मर्जी वैसे आप करो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट लिखना है हमको अपने टॉप 10 डिजायर लिस्ट एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में, और फिर उसको एक एक करके विजुअलाइजेशन भी करना है. और विजुअलाइजेशन में तो हम कहीं पे भी जा सकते हैं. अगर मैं आपको अभी बोलूं और बिल्कुल एक गोवा के बीच पे भी ले जा सकती हूँ, दैट अगर मैं आपको लगातार बोलती रहूं दैट इमेजिन दैट यू स्टैंडिंग ऑन द बीच ऑफ गोवा एंड यू कैन फील दैट ब्यूटिफुल ब्रीज कमिंग ऑन योर फेस व्हिच इज ब्लोइंग योर हेयर, एंड ऑफ कोर्स फील द सैंड अंडर योर फीट, वेव्स की आवाज सुनो और देखो कि वेव्स आपके पास आती जा रही है, और कैसे उसका जो व्हाइट कलर का फ्रॉथ है दैट्स टचिंग योर फीट, और आके फिर नीचे से सैंड जा रही है, एंड यू फील एज इफ you've gone down a little, है ना? ये सारी चीजें अगर हम लगातार बोलते रहेंगे तो विजुअलाइजेशन तो बहुत इजी हो जाता है. सो विजुअलाइजेशन डिफिकल्ट नहीं है. तो अपनी ड्रीम्स के बारे में हम जितना ज्यादा विजुअल्स होल्ड करेंगे उतनी जल्दी वो हमारे पास आएंगी. और विजुअल्स होल्ड करने के साथ साथ अगर हम उसमें इमोशंस भी ऐड कर देंगे,
है ना. इमोशंस मतलब फीलिंग कैसा लग रहा है, वाओ इट इज सो ब्यूटिफुल, लाइक यू नो यू वेयरिंग अ स्माइल ऑन योर फेस और यू हैव गूज बम्प्स, यू नो लिटरली लाइक दैट. कभी कभी कि आपको सपोज आपको कोई अवार्ड चाहिए था, एथलेटिक्स में चाहिए, तो यू कैन इमेजिन दैट यू स्टैंडिंग ऑन द बोर्ड, ऑन द विनिंग बोर्ड, एंड यू नो या आपने फिनिशिंग लाइन क्रॉस की, फिनिशिंग लाइन पे एक जनरली रोप होती है और दोनों साइड लोग खड़े होते हैं देखने के लिए कि कौन यू नो एथलेटिक मीट में फर्स्ट आया, जो भी है. तो आप जैसी आए, कैसी फीलिंग हो रही है, फील हाउ पीपल आर कमिंग एंड सेइंग कांग्रेचुलेशंस टू यू. और उसके बाद किस तरह आप इतना खुश हो रहे हो, आपने क्या की सबसे पहले वो चीज, किसको फोन किया, क्या इमोशंस फील हो रहे हैं कि वाओ आई मेड इट, आई मीन दिस इज सो ब्यूटीफुल, एंड मुझे हमेशा से था कि मैं इस लेवल ऑफ एथलेटिक्स तक पहुंच जाऊं. और वट एवर इट इज, जो भी आपको अपने ऑफिस में बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड चाहिए, या आपका बिजनेस है, आपने ये सोचा था कि आई वांट टू टेक माय बिजनेस टू दिस लेवल, एंड फाइनली आपने वो अचीव कर लिया है ऑफ वट एवर 1.5 CR और जो भी था, एंड नाउ यू फील दैट ओके इट्स टाइम टू सेलिब्रेट. तो क्या इमोशंस आपको फील हो रहे हैं, आप किसको बता रहे हो, क्या आपने पहली चीज की, तो अब आपने सोचा कि ओके लेट अस जस्ट हैव एन ऑफिस पार्टी बिकॉज इतनी ज्यादा हमारी सुपर सेल हुई है इस बार, तो आप सारे एम्प्लॉयज के साथ केक काट रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो, एंड ऑल ऑफ यू आर हैविंग सम नाइस मील टुगेदर बैठ के. तो मतलब वो सारी चीजें इस तरह से और बहुत डिटेल में हमको सेलिब्रेट करनी है. अगर आपने घर खरीदा है, अगर वो आपकी ड्रीम में था दैट यू वांट टू बाय अ हाउस, एंड फिर आप उस घर में मूव इन कर रहे हो, कैसे आपने कितने गेस्ट को बुलाया है, गृह प्रवेश कर रहे हो, गणेश जी की मूर्ति इफ यू आर अ हिंदू, ओके, अदरवाइज विच एवर वे यू डू इट. सो वो जो भी आप करते हो, सबसे पहले घर में जाके वो आपने वहां पे स्थापित किया. उसके बाद आप कैसे गृह प्रवेश कब कर रहे हो, डेट डिसाइड की, पंडित जी से बात करके आप डेट डिसाइड कर रहे हो कि कौन सा अच्छा शुभ मुहूर्त है, कौन सा दिन अच्छा होगा. उसके बाद आप you know the list you have made कि किन किन लोगों को बुलाना है, so you're calling only the close family and friends. फिर किस तरह से हवन हो रहा है, या जिस भी तरीके से आपके घर में पूजा होती है गृह प्रवेश की, हाउ मेनी पीपल आर देयर, मेन्यू क्या है, खाने में क्या क्या आपने किस तरह से मेन्यू आपने ऑर्डर किया है कि घर में ही खाना बनवाया है कि पैक बॉक्सेस बनवाए हैं, विच एवर वे. रिटर्न गिफ्ट में क्या आप दे रहे हो, मे बी you're giving लड्डूज और सब मिठाई और whatever. दैट इज हाउ डीप यू हैव टू थिंक, और उसको फील करना है पूरी पूरी इस फीलिंग को. अगर विजुअलाइजेशन का जो प्रोसेस अगर हमारा स्ट्रेंथन हो जाता है ना, हमारी ड्रीम्स बहुत जल्दी जल्दी अचीव होती जाएंगी. हम जो सोचेंगे वो हो जाएगा, बिकॉज विजुअल्स के साथ में जब इमोशंस अटैच कर देते हैं एंड वी कैन फील आवर ड्रीम्स कमिंग टू अस सो क्लोज, वी विल बी एबल टू सी अ रिमार्केबल डिफरेंस इन आवर लाइफ, है ना. और मैजिक कारपेट तो है ये, जो अलादीन का मैजिक कारपेट नहीं था, मतलब इमेजिनेशन, वो अलादीन मैजिक कारपेट पे बैठ के कहीं पे भी चला जाता था. वैसे ही हम भी इमेजिनेशन में अभी बैठे बैठे स्पेन भी जा सकते हैं, है ना, और इटली जा सकते हैं, और इटली के उस वाले आउटलेट में जहाँ पे मार्गरीटा पिज्जा बना था, वहां जो पहली बार जब मार्गरीटा पिज्जा आया था, वहां पे खड़े होकर मार्गरीटा पिज्जा भी खा सकते हैं. इजंट इट. इमेजिनेशन में तो हम कुछ भी कर सकते हैं. इमेजिनेशन में तो हम अभी अपने मतलब हम कोई कोर्स करके उसमें टॉप भी कर सकते हैं. इमेजिनेशन में हम 3 घर खरीद सकते हैं और तीनों को हम रेंट पे भी दे सकते हैं. इजंट इट. इमेजिनेशन में तो कुछ भी कर सकते हैं. तो अपनी इमेजिनेशन को, इसीलिए तो बोलते हैं ना, बेंटिनो में सारो जो बोलते थे कि बी इन द फ्यूचर प्रेजेंस, वो उनका मतलब यही था कि इमेजिन वो सारी चीजें करो जो आपको अपनी जिंदगी में देखनी है, बिकॉज वो बहुत जल्दी हकीकत में बदल जाती हैं. So try to imagine more and more of the things that you want to see actualizing in your life. Okay, the more you imagine them, the more you feel them, the more you talk about them, the more you write about them, more they are going to get attracted. You will magnetize them very quickly. And imaginations, you magnetize your dreams very quickly. Okay, फिर इसमें सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है कि किस तरह ऑस्ट्रेलियन अबॉर्जिन्स और सब लोग पहले ही सेलिब्रेट कर लेते हैं. मतलब अफ्रीकन वाले जो होते थे वो हंटिंग के लिए जब जाते थे, हंटिंग मतलब अपना खाने का जुगाड़ करने के लिए, तो जब हंटिंग के लिए जाते थे तो वो पहले ही थैंक यू बोल देते थे कि थैंक यू कि हमारी इतनी अच्छी हंटिंग एक्सपीरियंस रहा और हमको इतना बड़ा कैच मिला. पहले ही सेलिब्रेट कर लेते थे, मतलब पहले ही सेलिब्रेट कर लो आप. सो दैट इज हाउ दे वुड एक्चुअली बिकम सक्सेसफुल इन दैट हंटिंग वाला जो उनका एक्सपीडिशन होता था.
फिर वैसे ही फ्लडिंग ऑफ द नाइल रिवर के लिए, तो वहां बारिश नहीं होती थी, तो उनको हमेशा हर साल लगता था कि इस बार पता नहीं बारिश नहीं होगी, तो पैसा मतलब अब कैसे हो पाएगा सारा खेती और वो सब भी। तो वो पहले ही सेलिब्रेट कर, रेन डांस कर लेते थे लोग, कि रेन डांस करने का मतलब है पहले ही डांस कर लो, पहले ही सेलिब्रेट। डांस का मतलब होता है सेलिब्रेशन, है ना, म्यूजिक, डांसिंग, केक, ये सब सेलिब्रेटरी चीजें होती है। तो यूज देम मोर इन योर इमेजिनेशन। सो कल तो दिवाली थी, लेकिन मैंने फिर भी केक बनाया। वी कट द केक, like it was like that, because I think cake so much is to do with the celebration. Dancing is to do with the celebration. I mean, जब आप खुश होते हो ना तभी आप डांस करते हो, एक दुखी इंसान कभी नहीं डांस कर सकता। म्यूजिक आप अगर एंजॉय कर रहे हो और आप यू आर हमिंग योर म्यूजिक एंड यू आर इन योर ओन वर्ल्ड, दैट मीन्स आप सेलिब्रेट कर रहे हो, है ना, सेलिब्रेटरी चीजें होती हैं। तो कोशिश करके ये सब और ज्यादा करो, मन में सेलिब्रेशन करो, एक्चुअल केक बनाओ, काटो, मंगवाओ, किसी भी चीज को, छोटी भी चीज है। अगर फर्स्ट डे आपको अगर सैलरी भी मिलती है, या कोई बहुत बड़ा अप्रेजल होता है, या कोई आपका बिजनेस में कोई बहुत बड़ा क्लाइंट मिलता है, हमेशा ऐसी चीजें सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट खूब करना चाहिए जिंदगी में, क्योंकि जो आप अभी करते हो, जो नाउ में आप कर रहे हो, वो आपकी जिंदगी में छप्पर फाड़ के आएगा। अगर आप अभी सेलिब्रेट कर रहे हो, आप देखना लाइन लग जाएगी आपके ऐसे ओकेजन्स की जहां पे आप सेलिब्रेट कर रहे हो, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से यूनिवर्स डिलीवर्स मोर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, right? So the moment you are in the celebratory mode, that joyful mode, that chilled out mode, you will see that आपके पास फुलझड़ी लग जाएगी ऐसे ओकेजन्स की कि आप उनको सेलिब्रेट कर रहे हो one after the other. That's how beautiful life is. So do that more, feel happy more, like um celebration in different ways you can do that. Like when you want to celebrate your life, maybe you're just saying thank you universe for everything that I have, thank you for everything that I have, so you're just writing that. ओके इस तरह से। सो इमेजिनेशन खूब सारी करनी है हमको, और पहले ही हमको ऐसे इमेजिन करना है एज इफ हमारी ड्रीम हो चुकी है, पूरी हुई नहीं है। सपोज थैंक यू दैट आई हैव गॉट द कार ऑफ माई ड्रीम्स, that I'm now driving the car of my dreams and I feel so good about it. तो आप ये अभी से ही लिख लोगे that thank you that I'm driving the car of my dreams and I feel so good about it. सो अभी गाड़ी ली नहीं है, लेकिन अगर आप बार बार इसको पढ़ोगे, बार बार सोचोगे, तो अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में वायरिंग हो जाती है कि आपके पास गाड़ी आ गई है ना, और आप उसको ड्राइव कर रहे हो, और आपको कितना मजा आता है उसको ड्राइव करने में, और वो आपका जबकि टॉप 10 डिजायर लिस्ट में है, तो वो वाली जो फीलिंग है उसको ज्यादा सोचो कि आप ड्राइव कर रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है, एंड व्हाटएवर इट इज दैट यू वांट टू फील, किस तरह का उसमें म्यूजिक चल रहा है, एसी इतना स्ट्रांग है, आपको कम करना पड़ता है, कितनी लग्जूरियस कार है, इतना जगह है उसमें, यू कैन कीप योर कॉफी मग हियर, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट, फील द स्मेल ऑफ इट, फील द फीलिंग ऑफ होल्डिंग द स्टीयरिंग व्हील, कैसा लग रहा है, उसके सीट्स कैसे हैं, कितने कंफर्टेबल हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So that is how easy and effortless the whole process was. And कहाँ से पैसा आ गया, जो भी है, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, एक thank you that I have received the exact amount of money I needed for my European trip. तो suppose आपको you want to go for a European trip or wherever you want to go, so you have to put it in your dream list and the money will come from wherever. Okay, इसमें clearly ये लिखा हुआ है that आपको ये नहीं सोचना है कि ये वाला काम कैसे होगा. How is the job of the universe? Refrain from interfering in the job of the universe. अगर आपने यूनिवर्स के काम में इंटरफियर करना शुरू किया, अपने मन में ब्लॉकेजेस डाल के कि ये कैसे होगा, इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा, आज तो आई एम अर्निंग 50,000 तो मैं घर कैसे खरीद लूंगी, then you've lost it, then it doesn't work. Okay, so it is very clear that you are not thinking about how it will happen. Universe has its own way of orchestrating how to bring that dream to you, and it is done in the most magical way. जादू का मतलब और क्या होता है, मैजिक्स एंड मिरेकल्स का मतलब क्या होता है, जादू और चमत्कार. तो इसलिए यूनिवर्स के जादू और चमत्कार को बस एंजॉय करो, है ना, और बोलते रहो थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग माई लाइफ फुल ऑफ मैजिक्स एंड मिरेकल्स एंड आई एम रियली लविंग इट. माई लाइफ हैज बिकम अ सेलिब्रेशन and that is all you have to do. Okay, so it is not a rocket science. You will see universe is listening to everything that you are thinking in your head, even right now, and accordingly it is delivered to you.
अगर आप ये सोच रहे हो आई डोंट लाइक माई वर्क, आई डोंट लाइक माई वर्क, आई डोंट लाइक माई वर्क, आपको और ज्यादा ऐसे इंस्टेंसेस मिलेंगे दैट जिससे आपको वर्क और बुरा लगेगा, क्योंकि आप लगातार ये वाला थॉट को रेडिएट कर रहे हो अपनी जिंदगी से। सो इसलिए बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स नहीं करने, ठीक है। यही तो हमारी जर्नी है, यही तो ट्रेनिंग है। इसीलिए कहते हैं ना ह्यूमन माइंड बहुत फ्लूइड होता है। सो उस फ्लूइड को उसी वेसल में डालो जो आपका वेसल है, जो आपके सपनों का वेसल है, जैसा आपने सोचा था। तभी हम बोलते हैं यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू आर द डिजाइनर ऑफ योर लाइफ एंड द पेंटर ऑफ योर लाइफ। ओके, so think more of the things that you want to see happen in your life in front of your eyes, and that is how beautiful the things are, है ना। तो आज की प्रैक्टिस यही है। लिखने का तरीका इस 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी तक हम सबको पता है that saying thank you 3 times is starting the creation process, initiating the creation process. So initiate करना है हमको, उसके लिए थैंक यू 3 बार, क्योंकि 3 is the number of creation. इस ब्रह्मांड का एडवेंट हुआ था ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। शिव जी की 3 आंखें होती हैं, जो रीजन होता है ह्यूमन बीइंग का ट्रूथ ब्लिस कॉन्शियसनेस। ओके, एक फैमिली स्टार्ट होती है मदर फादर चाइल्ड। सो इस तरह से 3 बहुत पावरफुल नंबर ऑफ क्रिएशन होता है। तो इसीलिए हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 टाइम्स लिख के फिर हम अपने ड्रीम को लिखेंगे। और लैंग्वेज ऐसी होगी एज इफ दैट थैंक यू थैंक यू थैंक यू that our move to our beautiful new house was so easy. तो अब उसमें लिख लिया आपने, अब घर भी आ जाएगा एंड द मूव वाज सो इजी, ये भी लिख लिया, सब कुछ बहुत आसान है, सब कुछ वो हो गया। इस तरह से लिखना है एज इफ इट्स ऑलरेडी हैपेंड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू दैट आई नाउ ड्राइव माई न्यू कार एंड आई जस्ट लव इट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू दैट आई हैव माई ड्रीम जॉब एंड आई एम रियली लविंग इट। इस तरह से एंड विद द एग्जैक्ट सैलरी या जो भी आप डाल सकते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू दैट माई बिजनेस टर्नओवर नाउ इज सो मच, यू नो, एक्स अमाउंट। That is how we have to write, ठीक है। तो अब ये 10 हमने लिख लिए। फॉर पीपल हु हैव बीन देयर पुराने टाइम से, प्लीज आज उसको थॉटफुली बैठ के रिवाइज करो, बिकॉज हमारी लाइफ में इतना एक्सपेंशन आ गया है कि आई डोंट थिंक दैट अभी भी हम उन चीजों के बारे में, हो सकता है 1-2 ड्रीम्स हमको रिप्लेस करने की जरूरत हो, तो इसलिए एडिट और अपडेट कर लेना। नंबर 10 ही रखना है बिकॉज रॉन्डा बर्न सेज सो। उसके बाद नेक्स्ट ऑफ कोर्स हमको एक एक अपनी ड्रीम को लेके, सपोज हमने 10 अब ये लिख लिए ना, फिर वी गो टू नंबर 1। नंबर 1 को हमको पढ़ना है, उसके बाद हमको इसको मिनिमम 1 मिनट के लिए विजुअलाइज करना है और ये सोचना है दैट यू नो व्हाट इमोशंस डिड यू फील व्हेन यू गॉट दैट न्यूज, या जिस दिन आपको अपने घर की चाबी मिली और किस तरह से आप कर रहे हो, व्हाट इमोशंस डिड यू फील, हु वाज द फर्स्ट पर्सन जिसको आपने बताया कि आपका वो हो गया है, then of course what is the first thing you did when you got that dream answered for you, what is the first thing, maybe गाड़ी खरीदी है तो सबसे पहले जिसको भी बताया, फिर आप बहुत खुश थे, फिर आप मंदिर गए या जहां पे भी जो भी आपका रिलीजन है उस हिसाब से जो भी आप करते हो, आप वहां पे गए और यू नो मंदिर में पंडित जी आके एक स्वस्तिक बनाते हैं आगे पोनेट पे नॉर्मली, और 4 नींबू रखते हैं 4 टायर के नीचे और आपको बोलते हैं कि इसके ऊपर से चलो, और वो 4 नींबू पिचक जाते हैं। That's how I've seen all my cars get the, you know, we've got the puja done for them. So इस तरीके से एंड फिर कुछ प्रसाद देते हैं, वो देते हैं और ब्लेस करते हैं, फिर हम उनके पैर छूते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, जो भी जिस भी तरीके से आप करते हैं, है ना। सो दिस इज हाउ। फिर उसके बाद जो भी चीज, अगर आपको जॉब लगी है और आपको बहुत ही घर के पास जो आपने सोचा था, तो उसको आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो ये हमको सोचना है, इमेजिन करना है दैट आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला, या वैसे सेलिब्रेट करो कि आपको फर्स्ट सैलरी मिली है और आपको कितना अच्छा लग रहा है, इतना मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लग रही है, दैट सो मच ऑफ मनी हैज कम इन अ सिंगल शॉट एंड सच अ ब्यूटीफुल ऑफिस, अमेजिंग कोवर्कर्स, a job that you really love to do, it is so creative, the office finishes by 6 o'clock so you're back home in time because घर के पास आपका ऑफिस है, कितना मिलजुल के सब इतना हेल्पफुल है, आपके जो सीनियर्स हैं वो बहुत सपोर्टिव और बहुत लविंग है, इतना मजा आ रहा है, ऐसा लगता है कि एक फैमिली अवे फ्रॉम होम है। सो वो सारी चीजें इतना विजुअलाइज करना है नहीं अभी जॉब, लेकिन आपको उस लेवल तक विजुअलाइज करना है ना। सो एंड देन ऑल थ्रू ऑल दिस रिमेन ट्रू टू योरसेल्फ, यू नो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब अच्छे जोन में ही रहना है। तो ये आज जब हम ड्रीम लिस्ट ये 10 अपनी लिख लेंगे ना, इसके बाद
हमको अगले 10 दिन मतलब सारे चैप्टर्स वैसे ही आएंगे विच विल मैग्नेटाइज द ड्रीम लिस्ट क्लोजर टू अस। मतलब अगर हम कल हैव अ मैजिकल डे भी करेंगे ना, वो भी इसीलिए है बिकॉज अपनी ड्रीम लिस्ट को अपने पास मैग्नेटाइज करके लाने के लिए है वो भी। तो इसी तरीके से हमारा अभी वही चलेगा 10 दिन। मतलब एग्जैक्ट ड्रीम लिस्ट पे हम ड्रीम लिस्ट हमारी आएगी मैजिक हार्ट चैप्टर में, और उसके बाद बिफोर योर वेरी आईज मतलब हम दोबारा से विजुअलाइजेशन करेंगे अपनी ड्रीम लिस्ट को सामने रख के। इसके अलावा जो बाकी के टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिनसे सपने हमारे जल्दी पूरे हो जाएं, वो हम कल से करेंगे, अलग अलग एरियाज में करेंगे वो। ठीक है, तो वो भी हमको करना है। एंड यू विल सी दैट बहुत जल्दी आपके ड्रीम्स और जो भी अभी इम्पॉसिबल जो ड्रीम्स लग रहे हैं वो भी आ जाएंगे, बहुत जल्दी आ जाते हैं आंखों के सामने। बट थोड़ा सा अपना विजुअलाइजेशन और इमोशन को विजुअलाइजेशन के साथ कनेक्ट करके उसको स्ट्रेंथन करने की प्रैक्टिस करो। यू नो, फील इट। वो तभी होगा जब आप मेडिटेटिव पोज में होगे, वो नॉइसी दिमाग में नहीं हो पाता है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज को विजुअलाइज करना है और उसका इमोशंस फील करना है, उसके लिए आपको मेडिटेटिव होना जरूरी है। तो अंदर की जो नॉइस है ना, उसको शट डाउन पे डालना पड़ेगा और डीप ब्रीदिंग करके फिर विजुअलाइजेशन करना है ना। और तो ये 10 को हमने विजुअलाइज लिखा, फिर विजुअलाइज किया, फिर उसको रीड भी करना है दोबारा से। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस हो गया है। ठीक है, पहले तो ड्रीम लिस्ट को लिखना, अच्छे से एडिट करना, सोचना इस बारे में कि और क्या क्या चाहिए, और फिर उसके बाद एक एक को पकड़ पकड़ के उनको विजुअलाइज करना, और एक को विजुअलाइजेशन के बाद उस एक को दोबारा से रीड करना और यूनिवर्स को बोलना थैंक यू फॉर गिविंग दिस ब्यूटिफुल गिफ्ट टू मी, आई एम रियली लविंग इट एंड आई एम ग्रेटफुल। तो पहले से थैंक यू बोल दो, अब यूनिवर्स के पास ऑप्शन नहीं है आपको देने नहीं देने का। दिस इज व्हाट द प्रैक्टिस इज फॉर टुडे एंड देयर इज नथिंग मोर टू इट जितना हमने बताया। ठीक है, तो करते हैं, बहुत मजा आएगा। सोचो, अगर समझ में नहीं आ रहा कि 10 चीजें मुझे क्या चाहिए, कुछ भी चीज हो सकती है। हो सकता है आपको अपना वजन घटाना हो सकता है जैसे मेरा आज से होगा कि मुझे अपने एब्स टाइट करने हैं मैंने आपको भी बताया था, सो माय एब्स आर गेटिंग टाइटर एंड टाइटर एंड वेरी टोन्ड। ओके, so that will come to my this time's dream list. This was not there ever before. I never needed to do anything for my body weight or anything like that. Of course मैंने अपने विजन के लिए लिखा था because मेरा बहुत हाई नंबर का चश्मा लगता था, तो मुझे थोड़ा सा वो wanted my vision to get better and better, ताकि मैं छोटी छोटी चीजें भी बहुत आराम से पढ़ पाऊँ और मैं डिपेंडेंट नहीं रहूं चश्मे पे बिल्कुल। तो मैंने ये वाला लिखा था where it was related to body। बस, तो वो तो मेरा हो ही गया है पूरा। आप देख रहे हो मैं कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं पहनती और अब मुझे बहुत आराम से दिखता है सब कुछ, छोटी छोटी चीजें भी दिख जाती है। वंस इन अ ब्लू मून कभी ऐसे पहनना पड़ता है चश्मा, अदरवाइज बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ठीक हो गया, तो ड्रीम लिस्ट में से वो हट गई है वो वाली लिस्ट। तो आज होगा टू हैव अ वेरी टाइट एंड टोन्ड एब्डोमेन, इन शेप, एब्सोल्युटली। सो ये अब आ जाएगा। इस तरह से ऐसे एडिट्स होते हैं, है ना। जैसे मैंने, अब मेरी तो ऑलरेडी 10 की ड्रीम लिस्ट तैयार पड़ी है, अब मुझे एक हटा के एडिट करके ये डालना पड़ेगा ना। तो इस तरह से अगर सपोज आपका बॉडी वेट है, ऑफ लेट आपका बढ़ गया था सपोज 5 kg 6 kg या जितना भी है, या आपको मन में है दैट आई शुड हैव अ बॉडी वेट ऑफ दिस मच और आई शुड हैव अ फ्लैट टमी, एवरीबडी लव्स फ्लैट टमी एंड वी शुड हैव आल्सो, है ना। सो देन यू कैन ऐड दैट टू योर ड्रीम लिस्ट। सो एनीथिंग फिजिकल, एनीथिंग हेल्थ रिलेटेड, आपका ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल वगैरह को नॉर्मल, हेल्दी, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, थैंक यू दैट ऑल माय मेडिकल रिपोर्ट्स वर एब्सोल्युटली क्लियर एंड आई एम सो हेल्दी, like I'm back to being super healthy। तो ये भी आप लिख सकते हो कि मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर है, थैंक यू। जिस भी चीज के लिए आपको लिखना है, प्लीज गो हेड एंड राइट इट, यू कैन राइट एनीथिंग। तो इस तरह से 10 बहुत सारी चीजें हो जाती है, बिकॉज बहुत छोटी बड़ी चीजें हमारी लाइफ में है। जैसे अगर आपको आपकी मतलब बाल आपको उगाने हैं, मतलब दोबारा से आपको अच्छे नाइस काले घने लंबे, whatever you want hair, so you can write it that thank you, I have an amazing hair growth and my hair looks so nice, dense, like very soft, silky and so healthy, thank you, that way. So you can write this also. So whatever it is, you can put that in your dream list। और ड्रीम लिस्ट को हम किसी के साथ शेयर थोड़ी कर रहे हैं, तो आपको जो वाइल्डेस्ट ऑफ द थिंग्स जो आपको चाहिए आप लिखो। आपकी ड्रीम लिस्ट है, आपकी जिंदगी, एंजॉय करो ये जर्नी में। अगर क्रेजी थिंग्स नहीं करेंगे तो मजा कैसे आएगा, है ना। कभी कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेट लाइन में चलने में मजा नहीं आता, कभी कभी रोड पे डांस करके टर्न अराउंड करने में मजा आता है। इसलिए जो मर्जी है वो लिखो और इंजॉय करो लाइफ, हैव अ ब्लास्ट।
ओके सो आज की प्रैक्टिसेस में काउंट योर ब्लेसिंग्स जो हम सुबह ऑलरेडी कर चुके हैं, नहीं तो कर लेना अभी, और जिसमें हमको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है एंड देन वी हैव टू री रीड देम एंड से थैंक यू थैंक यू थैंक यू आउट लाउड, एक एक को पढ़ के। ठीक है, तो पहले लिखते हैं फिर हम डाउनलोड करते हैं रीड करके दोबारा से। और फिर आज सिट डाउन विद अ कंप्यूटर या पेन एंड पेपर अपने जर्नल के साथ और अपने टॉप 10 डिजायर्स को एडिट अपडेट जो करना है करो। ठीक है, और किस तरह लिखना है ये हमने पढ़ लिया है। थैंक यू से सेंटेंस शुरू होगा। ठीक है, अगर हिंदी में आप लिख रहे हैं तो इट विल बी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, इतनी बड़ी खबर कि मेरा इतना सुंदर घर मैं खरीद पाई हूँ उसके लिए, इस तरह से आप हिंदी में लिख सकते हो। तो शुरुआत धन्यवाद 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 से ही करना है। ठीक है, फिर उसके बाद इमेजिनेशन यूज करनी है और अपने दिमाग में आप ये सोचो कि वो चीज आ गई, अब आपके क्या इमोशंस फील हो रहे हैं, किसको आपने सबसे पहले बताया और क्या आपने सबसे पहले वो चीज करी। सो ये आपको करना है और उसके बाद दोबारा से रीरीड करना है वो वाला सेंटेंस इमेजिनेशन के बाद, और फील करना है ग्रैटिट्यूड, थैंक यू फील करना है। और इसमें मैजिक बोर्ड के बारे में दिया हुआ है, विजन बोर्ड जो होता है, विजन बोर्ड क्रिएट करना है तो आप विजन बोर्ड क्रिएट कर सकते हो। एक नॉर्मल रेफ्रिजरेटर पे उन जगहों की फोटो लगा दो जहां आपको जाना है। अगर आपको किसी का बहुत अच्छा परफेक्ट बॉडी लगती है, लाइक अ बिल्कुल आर ग्लास फिगर, वैसी लगा दो। अगर आपको किसी किसी के जैसा बनना है आप उनकी फोटो लगा सकते हो। जैसे हमने बेंटिनो मसारोना में बोला था कि लाइफ में हमेशा 2 हीरो होने चाहिए आपके। ठीक है, और आप क्योंकि उनके बारे में आप बहुत सोचोगे ना, धीरे धीरे यूनिवर्स आपको वैसा बना देगा। तो वहां पे था उसमें 2, हाँ एक भी नहीं 2 हीरो होने चाहिए तो उन्होंने ये बताया था, तो तब से हमने अपने 2 हीरो बनाए हुए हैं। तो उस उनके जैसा सोचो, अगर आपने हीरो की फोटोज लगा सकते हो, वेल यू कैन जस्ट डू वट एवर यू लाइक। विजन बोर्ड पे आप ये लिख सकते हो आई लव अवार्ड्स, और अपने आप को अवार्ड करके फोटोशॉप वाली फोटो डाल सकते हो। आई लव इटली, आई लव ईटिंग एन इटालियन पिज्जा इन इटली, तो आप वो इटली की कोई फोटो डाल सकते हो। whatever it is, if you love beaches, you can just write with a beach and अपने आप को फोटोशॉप करके डाल दो। आई एम श्योर आप लोग के घर में कोई ना कोई फोटोशॉप में बहुत अच्छा होगा, आप उनसे करवा सकते हो, अपने आप को वहां पे प्लांट करवा दो उस बीच पे एंड राइट आई लव बीचेस एंड वट एवर इट इज। अगर नया घर खरीदना है तो वो घर कैसा, आपको जनरली आपको पिंटरेस्ट से पिक्चर्स मिल जाएंगी। पिंटरेस्ट इज अ वेरी गुड ऐप, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, तो पिंटरेस्ट से आपको फोटोज मिल जाएंगी। और पिंटरेस्ट में अगर आपको अपने आप को लाइक वहां पे पोस्ट करना है, अपने आप को उस घर में डालना है, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, सो वट एवर इट इज, तो उसको विजन बोर्ड बोलते हैं। फन एक्टिविटी होती है, बट विजन बोर्ड के ऊपर जो मैंने 1 साल नहीं किया था वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ऊपर थैंक यू थैंक यू थैंक यू नहीं लिखा था पहले 1 साल। ठीक है, तो वो चीज मैंने 1 ईयर के बाद नोटिस की थी कि जब विजन बोर्ड बनाओ तो ऊपर 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल्ड कैप्स में लिखना बहुत जरूरी है। सो वो कर लेना है ना, मिस मत करना। दिस इज व्हाट आई हैड मिस्ड दैट। और रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस, होल्ड दैट मैजिक रॉक इन योर हैंड एंड थिंक थ्रू द डे एंड थिंक ऑफ द बेस्ट थिंग, इनमें से सबसे अच्छा कौन सा था, एंड देन पिक दैट वन एंड से थैंक यू, और वो करके सो जाओ। कोई अच्छा सी एफर्मेशन अपने दिमाग में बोल बोल के सो जाओ। सिर्फ ये भी बोल के सो सकते हो, थैंक यू एंड आई लव यू, थैंक यू यूनिवर्स एंड आई लव यू, बस यही बोल के सो सकते हो। या वेल्थ एंड सक्सेस इज माइन नाउ, ये बोल सकते हो। ठीक है, आई हैव एन अमेजिंग लाइफ, ये बोल के सो सकते हो। और यू कैन स्लीप विथ माई लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, एवरी डे इज सो मच फन। ठीक है, ये बोल के सो सकते हो। या जो भी जिस भी एरिया में कोई चैलेंजिंग चल रहा है, कुछ गड़बड़ चल रही है, सपोज हेल्थ में, माई हेल्थ इज सो परफेक्ट, आई एम ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी, ये आप कर सकते हो। सो वट एवर इट इज, सो यूज दैट सबकॉन्शियस माइंड का टाइम रात को अल्फा स्टेट में टू टर्न अराउंड द थिंग्स, टू जिप अराउंड द थिंग। That's how life is beautiful. So yeah, that's all for this chapter. Very, very important. आज अगर छुट्टी का दिन आप लोगों का है तो रोंडा बर्न ने इसमें एक लाइन लिखी है कि पूरे दिन इन जो आपने 10 की जो ड्रीम लिस्ट बनाई है, इसको इमेजेस में पूरे दिन बार बार देख देख के थैंक यू फील करो, मतलब ऑन एंड ऑफ। फिर वो नहीं है कि एक ही बार बैठ के करना है। सो डू दैट। When you do gratitude a little, your life will change a little. When you do gratitude a lot, your life will change a lot. That's one sentence we need to get hooked to, जो हमने day 0 में पढ़ा था, है ना।
So now let's go to the other book, which is The Hero, again by Rhonda Byrne, जिसमें हम पढ़ रहे हैं that how beautiful life is, और कैसे ये जो 12 जने हैं इनके कदमों में चल के जो इन्होंने ने किया वो हम करके हम भी अपने आप को एक ब्रांड बना सकते हैं, है ना? Each of us who are there will be a brand, right? Very soon we are on that journey. Maybe we already are in whichever way, but we will become a brand ourselves and the life will unfold in the most magical way. So yes, Unnati, good morning. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Peter Foyo. It's a cliche, but I believe it's really important to live your life to the absolute fullest. Yeah, I think this is also one of the affirmations जो हमने शुरू किया था, that thank you universe that I live each day of my life to the fullest. है ना? This was an affirmation that I was talking about, that which I needed. I needed exactly what was the affirmation जो हमने about 4 days ago पढ़ा था इसी किताब में. That thank you universe नहीं था, वो मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ, because gratitude के साथ कोई भी मिक्स कर देते हैं ना, stirrer के साथ जब thank you मिक्स कर देते हैं तो वो चीज में power 1000 times ज्यादा हो जाती है. तो इसीलिए हमने थैंक यू यूनिवर्स को स्टरर के साथ मिक्स कर दिया था उस सिंगल लाइन एफर्मेशन में, दैट आई लिव एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ टू द फुलेस्ट. इसमें ये लिखा हुआ था, बुक में ये था, तो हमने थैंक यू यूनिवर्स ऐड कर दिया था, दैट आई लिव एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ टू द फुलेस्ट. So yes, it's not a cliche. I don't know why Peter Foyo says this, but yes, it is really important to live your life to the absolute fullest. Yeah. Michael Acton Smith. Along with our family and our relationships, the job we do is one of the most important parts of our life. It's certainly somewhere you spend most of your waking hours, so it should be something enjoyable. It should be something that you are passionate about and that you care about. Yeah, so that's why they say that choose your relationships very carefully. I mean, we don't want anyone in our life who pulls us down, who's not a cheerleader, who always discourages us. We don't want that. We want someone who's a cheerleader. We want someone who compliments us. We want someone who's a very good listener. We want someone who understands us. We want someone who pushes us. And we want someone who's not complaining all the time. है ना? So that is what it is so important, even at the workplace. It says that along with our family and our relationships, the job we do is one of the most important parts of our life. And अपने workplace पे जो हमारा conduct होता है, are we pulled down again and again thinking that सारा काम मुझे करना पड़ता है, सारा burden मुझ पे ही आ जाता है, सिर्फ इसलिए कि मैं एक अच्छी worker हूँ तो फिर सारी responsibility वाला काम मुझ पे आता है? Do we think like that? No, enjoy it. And tell the universe that, universe, I've got this great responsibility at my workplace. Can I make it very fun and easy? I mean, can it be very conclusive while at the same time the journey to be very fun and easy? That's all. Create all the time. Don't sweat about small little things and added responsibilities जो workplace पे आती है. There are co-workers who are not your cheerleaders. Okay, there might be jealousies, there might be looking down on you, there might be snide remarks sometimes, but that's okay. I mean, like, there's so many people who are suffering. No, it is not just them. I mean, there are so many people. देखो उनकी जिंदगी में इतनी सफरिंग है कि वो आपको सफरिंग ही दे रहे हैं ना. तो उनकी जिंदगी में अगर हम रे ऑफ होप या लाइट उनको ब्लेस करके दे सकते हैं, व्हाई नॉट? सामने से मत दो, मन में सोचो that universe, can you make this person so happy, you know, like उसके you don't know कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है. अगर कोई भी आपको constantly look down या pin down कर रहा है या stone down कर रहा है कभी कभी बहुत forcibly, इसका मतलब है उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा suffering है and they need you the most. Okay, they need your blessings and your prayers. तो blessings दो उनको, ठीक है? Telepathy is always working. आप उनको blessing दो, उनको bless करो कि वो बहुत खुश हो जाए, और imagine करो कि वो बहुत प्यार से आपके साथ बात कर रहे हैं, या फिर अपनी कोई issue है वो आपके साथ share कर रहे हैं, and you have become a guiding light for that person.
So इसीलिए इसमें ये बहुत important चीज होती है that job पे भी somewhere, you know, like imagine you're surrounded by people who are always your cheerleaders. Isn't it fun? Like everybody is pushing you and that. So you can start saying to yourself, do your affirmations and your prayers and your this thing that, you know, I have so much fun at my work and all my co-workers are amazing people. They are always supporting and loving me. You can create anything. I mean, never forget your power to create. You know, that's very, very important. So, इसीलिए ये है that, you know, most of the waking hours हमारे actually workplace पे होते हैं. So, why not make it enjoyable? And we can, है ना? We have studied everything to turn around the thing for us in our lives in whichever form, whichever way, wherever. So, yeah, that's what. Hanji. John Paul DeJoria. I love what I do, or I wouldn't be doing it. Yeah, so try to start loving whatever it is, whatever kind of a job. This we had read in the other books also. That doesn't matter कि अभी जो काम कर रहे हो, मतलब definitely आपको कुछ और काम करना है जो आपका passion है, जो आपका इकिगाई है, जो आपका purpose है, something that you would love to do. लेकिन जो current काम है, उसमें अपना 50% मत दो, उसमें भी अपना 200% दो, because only then the next door is going to open in front of your life. Okay, so it is absolutely okay to, you know, like not being, knowing that this current job or this current business is not your interest area, but till the time it is with you, put your 200%. Otherwise the next door will take time in opening, or it may not open at all, because everything is about energy. The energy, the moment it comes down, वो रोने धोने, complaining, cribbing energy, getting happiness from outside your life, अगर वो वाली energy हो जाती है तो फिर काम बढ़ता नहीं है. ठीक है, तो अपनी energy elevated रखो, so that you can attract more of that from your environment and universe. Yeah. GM Rao. Money and security are very important to everyone. Personal satisfaction and passion for a particular thing you do is more important. That is why it is important to dream. Yeah, so money and security we all want. तो GM राव का है, नीचे फिर of course it is by Rhonda Byrne. So इसीलिए जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमको money and security चाहिए होता है. हाँ जी. If you have a full-time job, you probably spend around 250 days of the year at work. 250 days is over 2/3 of the year. So if you are not doing what sets your heart on fire and fills you with passion and excitement, you are wasting a lot of precious days of your life. Yeah. So give it your best shot is what GM Rao is saying, कि हम लोग generally on an average 250 days अपने workplace पे जाते हैं, जो हमारा offices हैं, जो भी है, हमारा business हो सकता है, हमारा store हो सकता है, जो भी हो सकता है, तो हम वहां पे जाते हैं. So that means 2/3 of the year हम लोग अपने काम की जगह पे होते हैं, और अगर वहां की energy अगर हमने खराब रख रखी है तो हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी. So current energy पे work करो, give your best shot and move ahead. That's what it's saying, कि अगर हम ये नहीं करेंगे, then we are wasting 250 precious days of the year in a negative energy. कैसे हम कर पाएंगे आगे? हम brand बन पाएंगे इन लोगों की तरह? कभी भी नहीं. तो इसीलिए be the best where you are right now. Yeah. Your work is going to fill a large part of your life. And the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. Steve Jobs, co-founder of Apple. Yeah, what to say about Steve Jobs? I mean, like, he was incredible. जब उन्होंने Apple अपना कंपनी स्टार्ट किया तो उसके पहले वो इंडिया आए थे और 6 महीने हिमालयास पे रह के उन्होंने मेडिटेशन सीखा था, और उसमें उनका विजुअलाइजेशन इतना स्ट्रांग हो गया था बिकॉज इज अ स्ट्रांग मेडिटेटर एंड मैनिफेस्टर. और उसके बाद उन्होंने जाके एप्पल कंपनी स्टार्ट की थी, एंड उनके गुरु और आश्रम का नाम भी है, मुझे इस वक्त याद नहीं है, मे बी सम ऑफ यू माइट नो मोर अबाउट हिम. So, but then I knew that 6, है ना, you know. Neem Karoli Baba something. अच्छा, नीम करौली बाबा के साथ इन्होंने किया था. हाँ, ओके. या सो नीम करौली बाबा जूलिया रॉबर्ट्स के भी मेंटर है. I mean, like,
I had read Julia Roberts' interview and she said that I'm, like the person was asking कि आप इतना Hinduism follow करते हो, तो she said that हाँ मेरे actually गुरु वहाँ पर है नीम करौली बाबा, तो इसलिए मैं meditation करती हूँ और उनको follow करती हूँ, ऐसा उन्होंने बोला था। तो नीम करौली बाबा इनके भी तो ये पहाड़ों पे जाके इन्होंने मेडिटेशन सीखा था और हिमालयस पे रहे थे आश्रम में, बहुत ही फ्रूगल उसमें, और उसके बाद उनकी जिंदगी का टेक ऑफ हुआ, और क्या टेक ऑफ हुआ उनका, तो मतलब एप्पल जैसा कोई, मतलब इट इज एक्चुअली अमेजिंग बिकॉज आई यूज अ लॉट ऑफ एप्पल। एक बार आप वो यूज करते हो यू गेट एडिक्टेड टू इट, in spite of the fact that no matter what people say that हर डिवाइस का चार्जर इन लोगों ने अलग अलग कर रखा है, आप एक चार्जर से सब कुछ नहीं कर सकते। आपकी वॉच अगर एप्पल है तो आप इस वॉच वाले चार्जर से आईपैड नहीं चार्ज कर सकते, और आईपैड वाले चार्जर से आप अपना फोन चार्ज नहीं कर सकते। तो दैट इज द वे एवरीबडी सेज दिस इज द वे ऑफ मेकिंग मनी। आई सेड व्हाई नॉट, आई मीन लाइक स्टिल पीपल बाय एप्पल। आई मीन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट एकदम से 1.5 लाख का फोन आता है, या जब भी ये लॉन्च करते हैं और कॉन्स्टेंटली अपडेट करते जा रहे हैं, आता जा रहा है, सो इतना। और ऑफ कोर्स स्टीव जॉब्स की डेथ के बाद फिर टिम ने टेक ओवर किया, और वो तो फिनोमिनली काम कर रहे हैं, मतलब ही इज वन ऑफ माय फेवरेट एंटरप्रेन्योर्स, लाइक रियली अमेजिंग। उनको कोई डिसीजन भी लेना होता है ना, तो वो अपनी पूरी टीम को बैठाते हैं, लोएस्ट डाउन द लाइन स्टाफ को और यंगस्टर्स को, और फिर वो कोई डिसीजन लेते हैं। इट्स नॉट दैट ही थिंक्स आई एम द बॉस एंड आई एम राइट एंड आई एम ऑलवेज लाइक दिस एंड दिस इज माय डिसीजन एंड एवरीबडी हैज टू फॉलो इट, ही इज नॉट लाइक दैट। सो एप्पल जो इन्होंने लेगेसी अपनी एप्पल की छोड़ी है स्टीव जॉब्स ने टिम के पास, और वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो इट इज लाइक रियली अमेजिंग। एंड उनका ये कहना है that your work is going to fill a large part of your life, so be very truly satisfied in whatever you're doing. और अगर ये नहीं हो रहा है तो सोचते रहो कि how can I make it truly satisfying, what more can I add to it, like that, what is it that I would love to do, and if you haven't found it yet, keep looking but don't settle. Okay, keep looking for it, but for now you have to give the best shot wherever you are. ऐसे नहीं कि ये काम तो मुझे पसंद नहीं है तो आप ड्रैग करते करते अपने आप को लेके जाते हो अपनी वर्क प्लेस पे। Very bad way of conducting ourselves. That's not what we have learned from so many mentors in the books that have taught us. Okay, so we currently give the best shot, how we can become the best, and then smooth transition to the other workplace अगर ऐसा कुछ है तो, है ना? So I think that's how much we are going to read today. Thank you so much, Unnati. You literally sound like a 16-year-old on the reading this thing. Thank you so much, ma'am. Thank you. Dipti, Tim and Steve, they are related or just No, they are not. workers? He was Okay. the CEO earlier, like, and then when Steve Jobs died, and then he became he was an employee, but a very trusted employee. Okay, Yeah. okay. Thank you. Yeah. Yes, so we have Muskans and Muskan sharing. I don't know if she's there on the call, and Deepa Rathor. So Deepa has been trying to share for a while, but then वो हमेशा late हो जाता है, and then it's tomorrow. So today we can start with Muskan and Deepa if they're there. Otherwise, yes, Asha ji. Yes, Asha ji, आप बोलिए please. हेलो मैम, मुझे Hi, एक good क्वेश्चन morning. पूछना है मैम। जो आपने अभी ये बताया है कि अपना ड्रीम बनाने हैं, थैंक यू लिखना है जैसे, तो अगर हमें परमानेंट फ्रीडम चाहिए कि जैसे कि हमें कहीं जाना है, शॉपिंग पे जाना है, सत्संग जाना है, दिवाली प्रोग्राम जाना है, तो उसको हम कैसे करेंगे कि कभी हमें फ्रीडम मिलती है, कभी नहीं मिलती? Acha, thank you that I have the freedom to take all decisions in my life with everybody's agreement. ओके, थैंक यू मैम। और एक क्वेश्चन और, आपने अभी बताया कि 2 हीरोज बनाने चाहिए हमें अपनी लाइफ में कम से कम, तो ये इस इसमें बुक मैं ने नहीं बोला है, ये सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग हाँ में जी, था, जिन्होंने कहा था हाँ कि जी, अपनी जिंदगी में हमेशा, बिकॉज फिर आप उनके बारे में सोचते हो तो धीरे धीरे अपने आप ऐसा बनता जाते हो, दैट हाँ वे। जी। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यदि हम जैसे कि किसी के बारे में सोचते हैं, तो उसकी फिर हम जो कमियां होती हैं हम वो भी एब्जॉर्ब करते हैं, क्वालिटीज नहीं, तो करते अगर हैं। आप हीरो वर्ड इज एसोसिएटेड विथ ओनली स्ट्रेंथ्स, सो यू नो दैट पर्सन इज नॉट यू। आप अपने आप को, जैसे कुछ क्वालिटीज होती हैं, अगर मैं किसी को अपना हीरो बनाती हूँ, है ना, जैसे माय हीरो इज ओपरा विंफ्रे, तो मैं ओपरा विंफ्रे की सिर्फ स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज, दैट शी इज अ गो गेटर, कॉन्फिडेंट, अमेजिंग कम्युनिकेशन,
a very rich, wealthy woman, an amazing person who runs so many schools for underprivileged girls. She attends the graduation ceremony of all the girls. She gives out a lot of money for different orphanages and charities. She is a very humble person. She has, like, gained merit in her life at her own accord. Very, very powerful go-getter, very intellectual. And her sense of analysis is so much, like when she talks, extremely compassionate. कोई उनके सामने रोता भी है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है, चाहे वो जहां पे भी हैं, ठीक है. A very well dressed person, carries herself with a lot of grace and dignity. So these are the hero qualities in her, which I am imbibing. Okay. I don't know whether she gets angry and whatever, like, no. If you're not, even what you think about is what you receive. It is very, very clear. So दिमाग ही नहीं जाता है कि जब किसी में 100 क्वालिटीज हैं तो ये क्वालिटीज मुझे इम्बाइब करनी है ना. तो वो मेरी हीरो है, तो मैं बस उनके बारे में यही देखती हूँ. वाओ, एवरी टाइम आई लुक एट इट, वाओ, एवरी टाइम आई लिसन टू, आई एम लाइक, मैं मुंह खोल के बैठ जाती हूँ कि माय गॉड, कोई ऐसे, मतलब, शी इज लार्जर देन लाइफ, ऐसे लोग भी होते हैं क्या. So it is like that. Okay, So thank you you, all ma'am. know my second hero is Priyanka Chopra. I love what she does. I'm not getting into whether she's drugging and smoking and all that. That's not my thing. Why is someone my hero? Is because of the grace she carries, because she's a go-getter, because she is so humble that even now she knocks the doors of the producers, or jaake wo apna CV dikhati hai that I have done so many, Hindi movies back home and I can do this. Kis tarah se India se unko jab pure coup ne, they decided they will not give her any work, so wo India chhod ke America chali gayi. So how she stood up, whether she was so depressive at that moment. I mean, she was on therapies or whatever, but then how she, and this is constantly, she says that I'm going to be the first female James Bond in the James Bond movie. How she did a Citadel. I would watch Citadel only for her, and wo puri series, or main dekhti thi, my God, yeah, like the way she carries herself, and whatever it is, her skin, her whatever she might be doing, that's not my call. Jo unme buraiyan hai, wo kitna baar apne family se jhagda karti hai, that's not what, so when somebody is a hero, you're only looking at what you want to derive. वैसे भी एक किताब भी जब आप पढ़ते हो, उस किताब में से आप क्या डिराइव करते हो, ये टोटली आपके ऊपर होता है ना. सो दैट इज हाउ. ठीक है, अगर आपको कोई बहुत बुराइयों वाला इंसान लगेगा, आप कभी भी उसको अपना हीरो नहीं बनाओगे. हीरो आप उसी को बनाते हो जिसमें आप लार्जर देन लाइफ फिगर देखते हो, और कमियां किसमें नहीं होती हैं. हाँ जी, हाँ, And बस you are not वही पूछना. becoming that person. You are taking the qualities of that person. जी, You're not becoming. You retain your individuality. This is something. Our uniqueness and our individuality remains ours. So you have to appreciate and you have to embrace your uniqueness, your individuality, and which is so important. While at the same time working on the strengths to derive those things. क्यों हम किसी का अपने विजन बोर्ड पे, हमने जय ने अपना विजन बोर्ड शेयर किया था, और उसमें उसने एक बड़ी अच्छी सी फिगर वाली, अच्छी सी कमर वाली लड़की लगाई हुई थी जिसने हाथ में 2 डंबल्स उठा रखे हैं. वो कितनी बार उसने अपना विजन बोर्ड हमारे साथ शेयर किया. अभी तो शायद वो इंडिया में नहीं है. सो बट देन वो इस तरह करके एक्सरसाइज करके, बिकॉज उनको वैसी बॉडी चाहिए थी, तो वो क्वालिटी उसको वो चाहिए थी. उसको वो लड़की नहीं बनना था, उसको जय ही रहना था. जय वैसी बॉडी को वर्कआउट करके वैसी बनाए. दैट इज व्हाट इट मींस. आई होप इट्स क्लियर. थैंक यू मैम. So both those girls are not there. So maybe tomorrow, Deepa, you're not there because she's specially, exclusively, kind of texted me all her victories in a row yesterday. That this. And then, it was like that. Chalo, then we'll call it a day for today. Have a blast of today. It's mostly holiday everywhere. So be in gratitude, work on your dream list. Please sit down and think about it. Think about what things do you want. Don't do it in a rush, because itne time tak hum is dream list pe work kar rahe hain, so don't rush about it. Don't think that, okay, I want this. Think about it. You have time till about 12. Ask yourself, ask your subconscious that what is it that you want in life? What is it that I should be doing? What is it, where do I have to go? What is that first milestone that I have to reach?
So that way, so ask yourself, you will get the answer. Maybe something out of the box जो अभी तक आया नहीं है, but आपको लगेगा हाँ हाँ ये तो मुझे बहुत जरूरी चाहिए, ये तो definitely इस तरीके से, है ना? अगर फेस पे भी सपोज किसी का बहुत एक्ने पिगमेंटेशन है और आपको बिल्कुल ही क्लीन क्लियर ग्लोइंग स्किन चाहिए, तो उसके लिए भी लिख लो टू हैव अ वेरी यंग क्लीन क्लियर ग्लोइंग स्किन. ओके, दैट ऑल्सो यू कैन राइट. एंड मेडिकल्स के बारे में नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करने पड़ते जब ड्रीम लिस्ट लिखते हैं. नेगेटिव चीजें नहीं करनी है कि मेरे सारे एक्ने चले जाएं. एक्ने वर्ड नहीं यूज करना है, ठीक है? पिगमेंटेशन वर्ड नहीं यूज करना है. टू हैव अ क्लीन क्लियर ग्लोइंग स्किन. ओके, एंड मे बी यंग यू कैन ऐड, अगर आपको बहुत ही यंग क्लीन क्लियर ग्लोइंग स्किन चाहिए. हेयर चाहिए टू हैव हेल्दी डेंस सॉफ्ट सिल्की हेयर, दैट वे. ठीक है? दिस इज हाउ यू हैव टू राइट इट यूजिंग ओनली द पॉजिटिव वर्ड्स और थैंक यू थैंक यू थैंक यू उसके साथ अटैच करके. ठीक है? चलो then. Bye bye and thank you so much. And Thank you so much, ma'am. with you Bye. for Thank waking you, ma'am. up Great on day. the next day to Diwali at 6 o'clock and being here for the session. So this is really amazing. This itself talks about your sincerity, your heart and your commitment. And I pray and wish that all your dreams and desires will very soon come true with Ma'am, this you are kind our Thank you, inspiration. ma'am. It has been really nice. Thank you, ma'am. Thank you very, very Jai much. Inspired by Guru. you, Thank you ma'am, so only. much, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, Thank you, ma'am. everyone. Have a great day All tomorrow. tomorrow. Completed Bye.